JPS फॉर्मेट में आएगा क्या? JPS? What is JPS? फिर लिखा है डॉक्यूमेंट No, this is a doc type. Job profit sheet. Blank paper BL. Pre-printed BL. This is a doc type. Okay. Job profit Yeah. show So you can short form. download, you can preview, you can email, and you can WhatsApp it. Right. So anything else we need to discuss about the job? We discussed summary, container details, carriage BL information. Under carriage BL information, you have the BL customs details and additional info. Okay. Then we talk about the partners and references, shipper consignee, right? Major network. All this will come under partners and references. Cost sheet and billing. We talked about the cost. You can create the templates or you can copy from the billing. So how to create the template? You have to go to the template master, charge line item, template master, and create it there. It is common. Cost and billing is common. One single template will be used for both costing and billing. Okay. Then coming to the billing sheet, all the charges will come. Select and define the customer. In that case, select and define the vendor. So when you define the vendor, you will see the records down here, right? And when you define the customer, you will see the records down below. Right? That means you are grouping the charges. If there are two customers, you can define two customers. When you're defining the customer, you can select a different customer. Or same customer, you can make two invoices. So each record is equivalent to one invoice. Okay. From here itself, you can either raise a invoice or you can raise a performer invoice. Okay. Because this invoice is already created, it is showing edit invoice. If the invoice is not created, it will show create invoice or create performer invoice. The performer invoice also. Now, if I go here, you see edit finance invoice. So if invoice is already created, obviously you cannot go back to create performer invoice. Performer invoice should be created before the finance invoice. So once the finance invoice is created, then you cannot create a performer invoice. Clear? In the in case of the cost sheet, you can just the operation person can just do the grouping. But if some editing has happened, the operation person can edit the purchase and just save it. Alright, clear about this? Yeah. What is the next thing what we need to take? Shobha? Shobha, you there? She's not there, I think so. Wait a second. Huh? So, and in Flare we used to do sub jobs, no? Hmm. So here how we do that? Why would you do sub jobs? That is what I wanted to ask Shobha. We are online again. Huh? We are online again. Okay. Okay. Did you have any console jobs? नहीं अभी तक कंसोल जॉब नहीं है दिनेश. Then why would you issue a sub job? Where is मुझे that? मालूम है आपको कि सब जॉब हम इशू The किया old था. software you're using sub jobs. एक सेकंड. Hmm. Sampada, are you talking about in the new system or the old system? Old system. ओल्ड सिस्टम में हम सब जॉब बनाते थे ना, वो शोभा को मालूम है. Okay. Let her come online. Yeah, sometimes हम लोग क्या करता है दिनेश, sometimes we will have एक जॉब के अंदर दो बिलिंग हो जाता है, तो उसके लिए हम सब जॉब्स बनाते हैं. उसके लिए दो जॉब बनाने की जरूरत नहीं है ना. As I've explained here in the billing sheet, you can create two invoices. No, you can make two records. Select here charge line item. Charge line item. When you say define customer, it will display the same customer for whom you have opened the job, but you can change here. Okay.
अपना संपदा, हाँ I would recommend that let Dinesh work on अपना software में, so that because his software what he's using or demo, it is a well defined kind of thing, and ours will not be well defined. The way you're having a issue, then Dinesh can sort it out immediately, right? हम्म. So वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट? well defined जॉब means भी आपका, होगा, चार्जेस भी होगा. नहीं 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 वैसा नहीं है. What हम्म. she's done, you can see it actually. तो उधर गलत किधर है, और if it's right, then you can say it right, no? If it's wrong, you can say it's wrong. क्या correction करना नहीं चाहिए? सुबिन, उसके लिए ग्रुप में डालेंगे तो देर आर सपोर्ट पीपल Okay. कैन आई मीन फुलफिल हर क्वेरी ऑन अ केस टू केस बेसिस. Oh, okay. तो यहाँ तो मैं जो आके जेनरिक एक ट्रेनिंग दे Okay. सकता हूँ, बाकी स्पेसिफिक केसेस जो है दोस पीपल विल बी हैंडलिंग. और if I have that if I am sitting free, I will handle. Somebody will attend to that query. Okay. Yeah. ठीक. हाँ हाँ बोलो. नहीं वो ओपनिंग बैलेंस का ना डॉलर. हाँ हाँ हाँ. वो परचेस वाउचर रेज नहीं किया था, वो मेरे को समझ गया बाद में. नहीं उसने वो रेज नहीं किया था, उसने खाली जॉब में डाल दिया था, वो कॉस्टिंग किया था और डिफाइन किया था कस्टमर. बट देन It वी was हैव not टू गो posted. आउटसाइड. हाँ It did not. It was not इट converted to वाज a नॉट. purchase हाँ voucher. परचेस तो वाउचर कहाँ नहीं. नहीं दिख रहा था? Hey, Dinesh, can जॉब you allow में Shobha to join in? वेंडर अकाउंट में नहीं दिख रहा था. वेंडर अकाउंट में नहीं दिख रहा था. हाँ ऑब्वियसली जब उसको परचेज वाउचर डाला नहीं तो वेंडर अकाउंट में दिखेगा भी नहीं ना. हाँ वही. वो नहीं डाला था तो वो मैंने डाल दिया फिर. वेंडर के लेजर अकाउंट में नहीं दिख रहा था क्योंकि परचेज वाउचर नहीं बनाया था उसका. शोभा, यू ऑनलाइन? Shobha, are you there? Yes, I'm there. Sampada was saying in the old software you were creating sub jobs. That is for LCL shipments where we are issuing multiple house BLs and one master BL. So it's a console. Yeah, a console. Okay. Now in this case, how do you create a console? Is you create shipments. Okay. Are you there? Yes, I'm there. Tell me. So here you create shipments and then you create a console. And you can insert the shipments, attach the shipments to that console. Oh, okay. So that will be different shipment numbers, that mean. I Yes, mean, the console different will have job different number. numbers. It will have it will have a console number. As you can see here that this shipment has been connected to a console. Okay. Shipment number 5358. It is connected to a console. In Can the you old open that, software, Dinesh? in the old software there was just one way of creating the console, that first create the master job and then create the sub jobs under that, Sub jobs. Yes. right? But then what Mm-hmm. happened that if you created a job independently, then you cannot Mm. insert that job into that console. That was the Mm. disadvantage, Okay. right? Yeah. Yeah. But here the console is different, the number is different, and the shipment is different. Okay. So option of air console. Okay. Suppose I go to this 6040. So 6040.
right? Either what you can do is you can create the console. Console means the basic information: Yeah. origin agent, destination agent, load port, discharge port, right? Mm-hmm. And then save. And after saving, you can edit the console, and you can put the container details, okay? Okay. And then shipments. Here you can attach the shipment. So when you click here, system Okay. will check any shipment like Jebel Ali to Rotterdam, which you have Mm. created and which you have not attached to any console. So it will show here. Show there, and we can choose. Okay. You can just click here and do OK. So that shipment will get attached with this console. So there is more flexibility, Mm-hmm. that if you Okay. have created an independent shipment, LCL shipment, and you want to put it in this console, Mm. you can put it in this console, Okay. right? Or Yeah. under the shipment also. Under the shipment also, you can go and you can attach this with the console. If you go here, console, you see this shipment is already attached. Okay. So you can detach it from the console. And once you detach it, you will get this button here attached to a console. So you can Okay. attach from the shipment to the console, or you can go to the console and you can search the shipment and attach it with that. So anytime you can attach, detach the shipments. So console Okay. number is different and shipment number is different. Okay. So what will be the criteria of attaching? Obviously the port of load, port of discharge. C export. It should be C Mm-hmm. export, port of load, port of discharge must match with the console. Okay. Okay. If you have a console, try to do it. If you get stuck somewhere, I mean, you can put it in the group. Somebody will connect with you, and Altaf or someone will show you how to attach and make the shipments. Sure. So you No can do a problem. FCL group, you can do an LCL groupage. Okay. Okay, and those details you can put in the console. FCL groupage, LCL groupage. Okay. Here, this option will show here. Now, suppose if I go here, add new, it's an export. FCL groupage, LCL groupage, RORO groupage. Okay. Now this Yeah. one you see is an FCL groupage. This you see is an LCL groupage. So if I go and click here, edit console details. So here down below, you will see the shipment attached. So basically this is an LCL shipment. And here you will see how many number of shipments, one Mhm. shipment has been attached. Okay. Okay. Of course, in the Mm. console, you can put the cost and you can put the Yes. billing, same like the job. Mm-hmm. Okay. Your BL charges, ocean freight charges, Yeah, you can this put is here. showing 1 and 2. Okay. Yeah. And in the last page under shipment, you will see all the shipment in the first page also and on the last page also. And from here itself, you can edit the shipment. Like if you want to go to that shipment, you can edit the shipment, Okay. which is connected to that particular console. Mm. Any other questions, Ankit? Prabha, Prabha, Yeah. you have any other question about this C and means about this jobs का बारे में? No, nothing. I don't have anything. Okay. हाँ, so that's it. हो गया. Would you be able to do the accrual and reversal processes at the month end? Accrual and reversal. वो क्या है? Accrual and reversal Acro. process.
But before you were following the work in process, WIP, हाँ WIP, work in हाँ process. Now it's the direct revenue and cost. हाँ, वो भी Directly it goes पूछने into का the था। P&L. एचटी Yeah, we had discussed, but then can we do it for the last month? No, I will actually do it. I will actually do it, and you can connect and see. One person should be responsible of doing that. Accrual and reversal. Kamina would be doing the accrual and reversal. She's the one who's handling the purchase now. You're doing the purchase entry. नो परचेज शोभा। So while doing the actual purchases. And what would be your role then? Because it is connected to the person who's doing the purchase entries. Before putting the purchase, the reversal has to be done. Who's raising the invoices? शोभा। Shobha. So Shobha is raising the invoice, she is doing the purchase, and she's the one who has to do the accrual and reversal. We cannot run the accrual. उसका प्रोसेस क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ वट एवर कॉस्ट यू हैव नॉट बुक्ड you have to book that cost through an accrual. And whenever you post the purchase voucher or cash purchase voucher, before posting the purchase voucher, you have to reverse the accrual and then post the purchase voucher. So instead of one entry, there are three entries: accrual, reversal, and then purchase. Same way with the invoice. You accrue the revenue, and before raising the actual invoice, first you reverse the accrual and then raise the invoice. So whoever is doing the purchase and the invoice, that person has to do the accrual and reversal. In charge of this, so we will have to connect with Shobha and show her how to run the reversal and accrual and reversal. Approval earlier Sampada used to do, right? No, there was no accrual. In We used WIP to there is no accrue accrual. cost, no, earlier. Earlier also we used to accrue cost. What accrual you were doing? नो अप्रूव कॉस्ट Which cost? which we are not yet received the email from the we used to approve the We are things. talking about that only. Uh, How did uh, you do that in Din- WIP? Dinesh, I'll give you a scenario, okay? Yeah, Okay, there's a shipment from China going to Zambia, a container. yeah, yeah, So we have a cost from China to Zambia. Shipping line का cost है yeah, अपने पास say $5,000, yeah, and we invoice the client as immediately after 10 days of sailing from China. We invoice the client all the way up to Zambia. yeah. Say we invoice the client $10,000. Mm-hmm. उसमें 5,000 is the freight cost and 4,000 is trucking cost. For an example, Mm, we have a profit of $1,000. Okay. mm, Now ये 4,000 का invoice हमको मिले only after the container reaches the final destination Zambia. The transporter will mm, give us. But we have to mm. accrue that particular cost and keep into the system in the system P&L sheet. तो उससे हम लोग क्या करते हैं 4,000 वो वेंडर को क्रेडिट दे के रख देते हैं हम लोग $4,000. कैसे क्रेडिट देते? वी अक्रू कर देते ना उसको अक्रू कर देते ना तो डेबिट किसको करते थे, क्रेडिट किसको करते थे, और क्रेडिट अक्रूवल वी का क्या वाउचर डालते थे? यू आर पुटिंग दैट वाउचर No ऑफ अक्रूवल. operation. ऑपरेशन कैन नॉट पुट एन अक्रूवल. इट इज अ We फाइनेंस cannot प्रोसेस. put there. No, No it is job में नहीं शोभा हम ऑपरेशन एक्चुअली यानी करते हु थे। you were doing the approval. अरे ठीक है स्टीव फर्स्ट इज दैट दिस अक्रूवल मैं जो बोला ना
उसका नहीं, वो जो अक्रूवल है। कह रहे हैं अक्रूवल करते हैं, यानी नोबडी इज श्योर कि अक्रूवल कौन करता है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अक्रूवल कैसे करते थे। डब्ल्यूआईपी में कोई अक्रूवल कोई चीज ही नहीं थी ना, उसमें तो अक्रूवल की जरूरत ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग वाज गोइंग इन द बैलेंस शीट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो आता ही नहीं था, तो उसमें तो अक्रूवल की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ। Yeah, 1 second, Dinesh. Actually, what used to happen is, I'll tell you. हम्म, Like how Subin just gave an example, say, of a cross-port shipment or whatever. From when we get हम्म, the debit notes or the invoices from Africa, there is a delay. या Now, we already have the rate agreed with them. So, या what like operations, whoever is entering the cost is they used to put in that cost, but it cannot be accounted because it's just the cost. And then the accounts, I think Sampada used to do it, the accrual part, and allocate it accordingly. We used to close the job also. And then, can I just stop you here? Can I just stop you here? yeah, Sampada, how sure. you were doing the accrual? Now you are saying that Sampada did the accrual. So let me just ask Sampada, how did she do the accrual? You have entered the cost in the job. How did you do the accrual? Actually, Shobha, what Dinesh is talking about accrual, na, it is about WIP because she has No, 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 misunderstood. no, no. Let us just get this over. Shobha is saying Sampada is to do the accrual. So can you just tell me how you did the accrual? Accrual nahi. Did you We pass any know work? No. 1 minute, Hemendra. Hemendra. It's very clear she did not do the accrual क्योंकि उसमें accrual का कोई option ही नहीं था. How did she do the accrual? हाँ, वो accrual नहीं करती थी. She was just putting the cost in the job. That's it. No, that the operations was doing. Okay. कौन डालता था एंट्री? Somebody else was putting an entry. नाम तो बताइए. कौन डालता था? नहीं नहीं हेमेंद्र actually जी, यहाँ पर है ना कंफ्यूजन है. आप बोल रहे actually जेवी डालते थे, संपदा नहीं बोलते नहीं जेवी वो नहीं क्या है डालते ना थे. अक्रूवल का ऐसा था कि लाइक समटाइम्स सुबिन यूज्ड टू से कि एलसीएल से ये कॉस्ट बुक कर ले एंड देन एलसीएल जो शिपिंग जो है ना हमारा तो उधर से वो कॉस्ट बुक कर ले एंड बट वी हैव नॉट रिसीव्ड द इनवॉइस फ्रॉम द कस्टमर सो व्हाट वी यूज्ड टू डू लाइक वी यूज्ड टू बुक दैट कॉस्ट और वो कस्टमर का अकाउंट में डाल देते कस्टमर कहाँ से आ गया इसकी कस्टमर कॉस्ट? नहीं सॉरी वेंडर हाँ. वेंडर के अकाउंट में डाल देते थे अब वेंडर के अकाउंट में कैसे हाँ डालेंगे? जब तक और वेंडर इनवॉइस उधर नहीं देगा तो आप कैसे वेंडर के अकाउंट में वैसा ही डालेंगे? ना अक्रूड करके उधर नहीं, तो मेरे को बताओ ना उसका क्या प्रोसेस था. आप बोलेंगे अक्रूड करके डाल दिया अक्रूड. परचेस ही इनवॉइस रेज करते थे तो परचेस बोलो ना मैनेज ऐसा कि परचेज इनवॉइस रेस हाँ करते थे. हाँ परचेज. हाँ तो परचेज आप बगैर इनवॉइस के परचेज कैसे आपने बुक कर लिया? वो That is अक्रूड not करके accrual. डालते That थे is not accrual. Na? If you are booking a purchase, that is a direct purchase. It is a purchase. बट वैसा ही हम करते थे But that लास्ट is not an accrual. अक्रूवल का कंसेप्ट क्या है कि आपको इनवॉइस नहीं मिला और आपने कॉस्ट बुक कर लिया. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल. अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इनवॉइस हाँ नहीं मिला और मैंने क्योंकि परचेज बुक कर लिया. बिकॉज डब्ल्यूआईपी था ना वो टाइम पे तो इसीलिए हम ऐसे कर रहे अरे ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. आप अक्रूवल बुक नहीं कर रहे हैं, आप परचेज बुक कर रहे हैं. हाँ सो डोंट यूज द रॉन्ग टर्म बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग द थिंग. पिछले 15 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी पे ही कर रहे हैं, अक्रूवल अक्रूवल. सो यू आर नॉट पुटिंग द बिकॉज अक्रूवल, दे यू आर हैव पुटिंग अ अंडरस्टूड परचेज. इट इन रॉन्ग तो आप उनको करेक्ट करें ना. या ये अक्रूवल हम बुक नहीं कर रहे थे, हम परचेज बुक कर रहे थे. Dinesh, शोभा सुबीन इंद्रा. yes, Dinesh. Now हाँ, I told you a आई थॉट scenario. व्हाट इज टू बी डन. मेरे को समझ में आ गया कि अक्रूवल बुक नहीं करे तो आप एक्चुअल परचेज बुक कर रहे थे. इट वाज नॉट एन अक्रूवल. Uh, okay, can I, Dinesh? Can I ask? Let me ask you a question here. Are you there? तो फिर जब उसका इनवॉइस आता था फिर क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे फिर.
नहीं एडिट करते थे ना वो। उसको फिर परचेज को एडिट करते थे। तो परचेज को तो एडिट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो जॉब में जाके एडिट करना पड़ता है। मीन जॉब ओपन रहता तो एडिट करते थे। एडिट करते थे। तो बेसिकली दैट इज नॉट एन अक्रूवल, यू आर एक्चुअली पुटिंग अ परचेज, यू आर एक्चुअली पुटिंग अ परचेज। अक्रूवल एक एंट्री अलग होती है और परचेज अलग होती है। परचेज इज नॉट अक्रूवल, वैसा नहीं अक्रूवल कर रहे हमेशा थे हम। जर्नल एंट्री होती है। कैसे है ना कि जैसा शोभा ने बताया ठीक है, अभी कि समझ गया ना, cost समझ defined गया था, मैं। तो हमको मालूम था कि ऐसा ही इनवॉइस आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दैट वाज नॉट एन अक्रूवल। डब्ल्यूआईपी में अक्रूवल नहीं होता है, तो एक्चुअल परचेज एंट्री होती थी। और जब वेंडर का इनवॉइस आता था उसमें अगर कुछ चेंजेस हैं, इनवॉइस अगर मैच नहीं कर रही है तो परचेज एंट्री को एडिट करते थे। ठीक है। Okay. Can I ask you a अरे question, Dinesh? Can I ask you a गो question हेड। here? Okay. In this particular scenario, okay, where we know what the cost is, but we need to close the job, or we put the job in, we cannot close the job because we have not got the invoice from the vendor yet. How can we close the job? Because we knew that अभी के we don't. सिनेरियो में बात कर रहे हो, डीआरसी के अभी जो इम्प्लीमेंट किया उसके बारे में बात कर रहे हो? Uh, Going forward, let me उसके बारे ask में you a question. Going forward, not past. Going हाँ, forward. ठीक है। टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी देखो आप इनवॉइस बना रहे हो, डायरेक्टली पीएनएल में चला गया। Correct. आपने कॉस्ट बनाया, डायरेक्टली पीएनएल में चला गया। Correct. तो यहाँ जॉब क्लोजिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। जॉब क्लोजिंग का कंसेप्ट कब होता है कि डब्ल्यूआईपी है, सारी चीज बैलेंस शीट में जा रही है, उसको पीएनएल में डालने के लिए आप जॉब क्लोज कर रहे हो। तो एक्चुअली एक एंट्री पड़ती थी फ्रॉम बैलेंस शीट टू पीएनएल। लास्ट ट्रांजैक्शन डेट पे वो ट्रांसफर होता था, कॉस्ट और रेवेन्यू इनटू द पीएनएल। Okay. ये पहले डब्ल्यूआईपी में होता था, लेकिन अभी जो होता है वो डायरेक्टली हिट कर रहा है पीएनएल। सिंस इट इज हिटिंग डायरेक्टली पीएनएल, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जॉब क्लोजिंग। हाँ, Okay. जॉब क्लोजिंग है उसमें, जॉब क्लोजिंग है, आप जॉब क्लोज करो, बट दैट विल ओनली प्रिवेंट फर्दर एंट्रीज इनटू द जॉब, दैट्स इट। देयर इज Okay. नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Okay. Now, technically, in such scenario, if the purchase cost from the transporter we're going to get next month, for an example, that means this month it will be shown at $4,000 as profit. It will नो, इट happen विल that नॉट way. बी शोन एज $4,000 प्रॉफिट इफ यू पुट द अक्रूवल। Okay. इफ यू बुक द So, अक्रूवल, इसमें okay. क्या होता है कि समझो जनवरी के आपके 50 जॉब्स हैं, Huh. तो बॉटम लाइन इज कि ये 50 जॉब्स का आप रेवेन्यू और कॉस्ट जनवरी में ही बुक करोगे, इट विल नॉट गो Okay. इनटू फरवरी। तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो? आपने कॉस्ट डाल दिया जॉब में, आपने इनवॉइस बना दिया, लेकिन कॉस्ट अभी तक आया नहीं है। तो सिस्टम Okay. आपको बताएगा कि ये कॉस्ट आपने डाला हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आया नहीं है कॉस्ट। तो आप Okay. एक प्रोसेस रन करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें अक्रूवल एंट्री डाल देगा, ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री डाल देगा। वो कभी रन करने का है? एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट स्टेप? Okay. HT, you're clear about that? ठीक है, तो मंथ एंड में आपका सारा कॉस्ट बुक हो गया। फिर कुछ ऐसे जॉब्स भी होंगे जहां आपने इनवॉइस नहीं बनाया है। Okay. ठीक है, बहुत कम ऐसे जॉब्स होंगे, 4-5 जॉब्स होंगे जहां इनवॉइस नहीं बनाया है कि इनवॉइस नेक्स्ट मंथ में बनेगा, वी आर वेटिंग फॉर समथिंग एक्स वाई जेड। तो उसका एक अक्रूवल रेवेन्यू भी रन कर लोगे। यानी बॉटम लाइन इज, जनवरी का जितना भी रेवेन्यू है, जनवरी का जितना भी कॉस्ट है, जनवरी में बुक हो जाएगा, जितने भी जॉब्स हैं। हाँ, सिस्टम सिस्टम अपने आप तो नहीं रन करेगा, यू हैव टू गो एंड क्लिक ओके रन द रेवेन्यू और रन द एंट्रीज, ऑटोमेटिक डालेगा। अरे अपने जॉब में तो डालेंगे ना, आपसे कुछ तो फिगर डालेंगे ना जॉब में, नहीं तो अक्रूवल कैसे डालेगा सिस्टम? जॉब में आप कॉस्ट डालते हैं ना, जॉब में आप रेवेन्यू तो डालते हैं ना बिलिंग शीट में। रेवेन्यू कॉस्ट अमाउंट ऑफ तो सेल डालेंगे। दोनों डाल देता ना HT? Sorry. नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है तो सिस्टम को भी नहीं मालूम है ना।
आपको नहीं मालूम तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, एंड ऑफ द मंथ तो हो गया। अभी समझो एंड ऑफ द मंथ तो हो गया, आप अक्टूबर में आ गए, आपको समझो सितंबर का क्लोजिंग करना है और अभी तक आपको कॉस्ट नहीं आया है, तो ऑब्वियसली अगर कॉस्ट नहीं आया तो वो अक्रूवल में भी नहीं आएगा ना, वो बाद में बुक करेंगे उसको जब एक्चुअल आएगा। तो सितंबर के मंथ में वो कॉस्ट नहीं आया, सितंबर के मंथ में आपका प्रॉफिट हाई आएगा बिकॉज ऑफ दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट। अक्रूवल जो आपने कॉस्ट डाला जॉब में उसका अक्रूवल चलेगा, जो कॉस्ट डाला है और जिसका परचेज नहीं बनाया है उसका अक्रूवल होता है। उसका अक्रूवल होता है। ओके। ठीक है ना? फिर फरवरी में आपको इनवॉइस मिला, तो फरवरी में जब आपको इनवॉइस मिला सबसे पहले तो आप उसको रिवर्स करेंगे जो अक्रूवल आपने डाला है जनवरी में, क्योंकि आपको परचेज डालना है ना। तो वहां पर एक सिस्टम जनरेटेड रिवर्सल है, तो जो आपने अक्रूवल डाला है एक सिस्टम उसको रिवर्स कर देगा और फिर आप उसका परचेज बुक करोगे। अब ये परचेज में अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया तो वो जॉब में जाके एक्स्ट्रा कॉस्ट डालोगे और फिर परचेज बुक करोगे। Okay, Dinesh, I have a question again on this only. Okay, now since we know we have an quote from the vendor, $4,000 है करके, why don't we हम्म issue a credit note, and that credit note, that amount will go and sit as payment like to the vendor's account में आके, and then when the vendor invoice आएगा तो वो set off कर सकता है ना? Possible that नहीं way? नहीं, यहाँ पर I'm कोई asking a question, huh? डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। Okay, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कोई कंसेप्ट नहीं है। okay, You cannot issue a credit note just by yourself. There has to be a debit note from the vendor. Only then you can issue a credit note. क्रेडिट नोट का पर्पस अलग होता है okay. कि Now सामने वाले I'm trying वेंडर ने I'm आपको डेबिट नोट दिया और डेबिट नोट के सामने आपने बेसिकली यू आर जस्ट अक्रूइंग ना, कि correct. सामने वाले ने इनवॉइस नहीं दिया एंड यू आर इशूइंग अ क्रेडिट नोट। सो Hmm. एक तो वो सेम एंट्री है और Hmm. इसमें अक्रूवल में क्या होगा कि जो एक्चुअल वेंडर है उसका अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। Okay. एक अक्रूड कॉस्ट करके अकाउंट आता है, वो अकाउंट क्रेडिट होता है। वेंडर के अकाउंट में अक्रूवल नहीं दिखेगा, And then क्योंकि उसको क्यों क्रेडिट when we करें get जब the उसका actual इनवॉइस ही नहीं purchase दिया। cost, purchase invoice, we enter the हाँ, details. Then वो accrual में जाके no, you don't need to enter the details. You don't need to enter the details because details are already entered in the job ना। नहीं नहीं नहीं, वो उसका परचेज, उसका डेबिट नोट, जो वेंडर का डेबिट नोट का नंबर सब एंटर करना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ, वो तो जब भी आप परचेज बनाएंगे तो उसका इनवॉइस नंबर वगैरह तो एंटर करेंगे ना परचेज में। हाँ, ओके। बिकॉज इनिशियली नहीं आता ना, जब भी परचेज इनिशियली में खाली उसको वेंडर का दिखेगा। नाम आएगा, करेक्ट, नहीं, अक्रूवल में। इनिशियली जब नहीं अक्रूवल में वो वेंडर के अकाउंट को हिट ही नहीं करेगा ना, वो एक अलग से एक डमी अकाउंट सॉरी, है। अक्रूवल अकाउंट में, बट वी हैव टू राइट द वेंडर नेम, राइट? देन ओनली वी कैन रिलेट इट, राइट? हाउ वी गोइंग टू रिलेट इट हाँ, लेटर वो ऑन? सिस्टम दिखाएगा ना, क्योंकि जब आपने जॉब जॉब कॉस्ट शीट में वेंडर का नाम लिया है तो जब वो ओके, अप्रूवल रन करेगा वहां पर एक्चुअल वेंडर का नाम दिखाएगा ना। हम एक काम ओके, करते हैं ना, कल ये सितंबर का अक्रूवल चला देते हैं ना। ओके। ऐसा जॉब अभी नहीं आएगा। जो देर इज सितंबर के जॉब्स क्रिएट किए हैं, देर देर सितंबर देर के इज जो जॉब्स क्रिएट किए हैं उसमें कॉस्ट और रेवेन्यू डाल दे, कल एक ओके, अक्रूवल चला देते हैं हम ओके। सितंबर का। इतना सब डिस्कशन करने के बजाय आधा एक घंटा उस पे प्रैक्टिकली करके अच्छा, देखते हैं ना। मेरे को बताओ कि आप बोल रहे कि अक्रूवल देन टैक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना वो वेंडर। ऑब्वियसली नॉट। अच्छा, तो वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में रिफ्लेक्ट होगा। जब परचेज डालेंगे तब टैक्स पीरियड में रिफ्लेक्ट होगा, उसका इनवॉइस मिलेगा तभी रिफ्लेक्ट होगा। तो इन दिस सिचुएशन देन देयर इज नो सच जॉब क्लोजिंग एंड ऑल दैट व्हिच वी यूज्ड है टू जॉब क्लोजिंग है, बट फाइनेंशियली उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है जॉब क्लोजिंग का।
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, हो जाएगा। ओनली रिक्वायरमेंट इज के जॉब में कॉस्ट और रेवेन्यू फिगर्स होने चाहिए बस। नहीं जस्ट मेक श्योर यू हैव एडेड ऑल द। ऐसी पॉसिबल अभी ट्राई करके देखो ना, how it looks like. If we give our login credential to Dinesh, then Dinesh can check, सुबह no? अभी नहीं। आई Sorry? एम ऑन अ Ah, right, आई एम okay. ऑन अ शॉर्ट टाइम टुडे। 3 Okay, मीटिंग्स है okay. मेरी। Okay, यहाँ से sorry. निकल के मुझे जबलपुर जाना है, अगेन आई हैव टू कम बैक। तो ये प्रोसेस जो है कल बैठ के हम कर सकते हैं। देखिए Okay, इसमें जो है ना, ये ऑप्शन में जाए जॉब कॉस्ट अक्रूवल। शोभा, दिस okay. इज फॉर यू, बिकॉज This यू is विल बी for? Yeah. हैंडलिंग। सो गो टू दिस ऑप्शन जॉब कॉस्ट अक्रूवल जर्नल। ठीक है, Mm. so this will open the job cost accrual. Click on add new. Okay, Mm. shall I repeat that or you are No, no, it's okay. Continue. okay? Add new. When you go, obviously this will be blank because you have not run any accrual. So this is Correct. basically those accruals which I have already run. Okay, Mm. you click on add new. Now you want to run the accrual for which date? Obviously you will select here September. Date range will be September for you. Mm. Okay, Okay. Okay. 30 so I days. am taking last 30 days. For example, I am Mm. taking last 30 days. So when I select last 30 days, it shows me the jobs of the last 30 days. Mm-hmm. Okay. And when you select September, it will show you all the jobs of September. Okay. Okay. Here you will see the actual vendors in the jobs, defined in the job. Yeah. Okay. And here you will see the dummy account which we have already created, cost accrual Cost. vendor. Okay. Clear about this? Mm. When the accrual is run, this vendor, actual vendor, will not be affected. This is only for your reference purpose. Okay. Okay. And here you will see the amounts. Mm. At the end, you will see the amounts. So wherever you see there is no amount, that Mm. means the cost has not been Cost is defined. not defined. Okay. Okay. So mostly all the costs should be defined. Okay. And you just need to select here and batch process accrual. This we will be doing. Okay. We will show you how to do it. Okay. System will automatically run the batch process. It will debit the job and it will credit Okay. cost accrual vendor. तो ये जीरो हो जाएगा इधर, करेक्ट? हाँ, मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा, ये रिपोर्ट से ओके. निकल जाएगा। जिसका जिसका अक्रूवल चला दिया है वो रिपोर्ट से निकल जाएगा। So basically every month end we have to go into मंथ this एंड। accrual thing, check कितना हाँ, accruals है, go back and सबका vendor को फोन करके उसका invoice लेके इसमें एंट्री करेगा तो देन वो नहीं नहीं रिवर्स नहीं होके नहीं, चलेगी. इनवॉइस की जरूरत नहीं है, अभी अक्रूवल चला देने का। नहीं, accrual चला गया, we'll see ये पेंडिंग करके दिखेगा ना, इसका सब एंट्री नहीं किया करके, इसका हाँ, एक्चुअल परचेज को नहीं किया, आया नहीं करके. कोई बात नहीं ना, नहीं आया इसलिए तो अक्रूवल चला रहे। ओके. फिर कॉस्ट अक्रूवल वर्सेस रिवर्सल। ओके. अक्रूवल डालने के बाद किसका किसका रिवर्सल नहीं किया, ओके. क्योंकि जब उसका इनवॉइस आएगा तभी उसको रिवर्स करेंगे ना। हम्म. तो इसमें कॉस्ट अक्रूड बट नॉट रिवर्स्ड। तो ओके. ये सारा डिटेल मिलेगा। दैट मीन्स यू हैव डन योर वर्क, एंड ऑफ द हम्म. मंथ यू हैव डन योर वर्क, यू हैव अक्रूड द कॉस्ट। लेकिन अभी सामने वाले का इनवॉइस नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया तो ऑब्वियसली परचेज भी नहीं डाला है, परचेज नहीं करेक्ट. डाला है तो रिवर्सल भी नहीं डाला है। पहले रिवर्स करेंगे फिर परचेज डालेंगे। तो ये रिपोर्ट बताएगा भाई इसका इसका इनवॉइसेस बाकी है। ओके. ओके, देन योर नेक्स्ट प्रोसेस विल बी
रिवर्सल, जॉब कॉस्ट रिवर्सल। तो परचेज डालने से पहले उसको रिवर्स करेंगे और फिर परचेज डालेंगे। ओके। तो 2-3 स्टेप है इसका, रिवर्सल एंड देन परचेज। तो अक्रूवल के सामने रिवर्सल एंड देन द परचेज। तो मैटर को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, पहले अक्रू कर लेते हैं। ओके। अक्रू करने के बाद फिर अभी ये 1-2 दिन में अगर कोई इनवॉइस आया है किसी वेंडर का, तो उसको फिर परचेज साइड पे डाल लेते हैं। ठीक है। ये दिस जॉब इज डन, ये एक्शन कौन करना चाहिए? शोभा करेगी ना, ओके। पर्सन हु इज हैंडलिंग द जॉब, इनवॉइसिंग एंड परचेज। बिकॉज शी नोज वो जॉब में क्या क्या कॉस्ट होना चाहिए करके। हाँ, ओके। और इतना को वो पर्टिकुलर नहीं होना है। कॉस्ट का मतलब है कि 10% ऊपर नीचे हो सकता है, इट कैन ओके। नेवर बी एग्जैक्ट। ओके। इनवॉइस कैन बी 99% करेक्ट, 1% उसमें भी ऊपर नीचे होता है। ओके। कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी 10% होती है कि ओके। कॉस्ट ऊपर हो गया, कॉस्ट कम हो गया। कम तो नहीं होगा, हमेशा ज्यादा ही होता है।